Assalamu alaikum dear students. It is our second lecture of biology class 9th. Today we will discuss microscope discovery, rather a history of microscope. So the first microscope was discovered by Zacharias Janssen, and it was in Holland 1595. It was just a simple tube, as you can see in the picture. This is a simple tube like microscope, and it has two lenses. One lens is right here, and the other lens is right there. The second microscope was made by Anton von Leeuwenhoek, and he made a better microscope. He also observed small microorganism under it, and he is also known as the discoverer of bacteria and other microorganism. As you can see in the picture, this was the microscope which was made by Leeuwenhoek, and it is a better microscope as compared to the simple tube-like microscope made by the Zacharias Janssen. Now let's come to the types of microscope. So we have two types of microscope. One is light microscope and another is electron microscope. So light microscope, what is light microscope? So light microscope is a type of microscope which use light to magnify an object. अब अगर हम टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप की बात करें तो माइक्रोस्कोप की टू टाइप्स है। एक हमारे साथ लाइट माइक्रोस्कोप है और एक हमारे साथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। लाइट माइक्रोस्कोप में हम लाइट यूज़ करते हैं किसी चीज़ को मैग्नीफाई करने के लिए। इट हैज़ टू टाइप्स, इसके दो टाइप्स है। एक हमारे साथ है सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरा हमारे साथ है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। नाउ व्हाट इज सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप? सो सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप इज अ टाइप ऑफ light microscope which has single lens in it, and examples of simple light microscope is magnifying glass, while compound light microscope is a type of microscope which has two lenses. One lens is the eyepiece lens and another lens is the objective lens. अब हमारे साथ अगर हम सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप में हमारे साथ सिंगल लेंस होता है। इसकी एग्जांपल हमारे साथ मैग्नीफाइंग ग्लास है, जबकि कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप को अगर हम देखें तो इसमें दो लेंसेज होते हैं। एक हमारे साथ आईपीस लेंस और दूसरा हमारे साथ ऑब्जेक्टिव लेंस। इन दिस स्लाइड वी आर कंपेयरिंग the simple light microscope with a compound light microscope. So simple light microscope is a very simple microscope and it is a magnifying glass. It has one lens right here, while compound light microscope is advanced form of microscope, and it has two lenses. One lens, the eyepiece lens, is right here, and another type of lens is the objective lens, which is right here. Now the second type of microscope is the electron microscope. So what is electron microscope? Electron microscope is a type of microscope which use a beam of electron to magnify an object. अब हमारे साथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे साथ वो माइक्रोस्कोप है जिसमें हम लाइट यूज़ नहीं करते, इसमें हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं किसी चीज़ को मैग्नीफाई करने के लिए। इट्स मैग्नीफिकेशन पावर इज़ 100 टाइम्स ग्रेटर देन लाइट माइक्रोस्कोप। अब इसकी मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो हमारे साथ 100 टाइम ग्रेटर है लाइट माइक्रोस्कोप की बनिस्बत। So it is the most advanced form of microscope. It has also two types. One is the scanning electron microscope and one is the transmission electron microscope. So scanning electron microscope is used to study the surface of a specimen, while transmission electron microscope is used to study the internal parts of a specimen. Here we have a term specimen. So what is specimen? Specimen is used for anything which we want to study under microscope. अब हमारे साथ specimen क्या है? तो specimen हम हर उस चीज़ को कहते हैं जो हम माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करना चाहते हैं। तो हमारे साथ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ की सरफेस स्टडी के लिए। एक स्पेसिमेन की सरफेस डिटेल्स सरफेस स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम एक स्पेसिमेन के इंटरनल पार्ट्स को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सेल को स्टडी करना चाहे तो सेल के मेम्ब्रेन को डिटेल स्टडी करने के लिए हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, और इंटरनली अगर सेल को हम स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे। In this slide we are showing an electron microscope. So here we have an electron, all the setup of electron microscope. यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे साथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक इलेक्ट्रॉन गन होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे साथ स्टेज है जिस पर एक स्पेसिमेन रखा गया है। तो हमारे साथ इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस होता है, और वो बीम इलेक्ट्रॉन बीम जो है यहाँ पर बम्बार्ड होता है, और यहाँ पर हमारे साथ एक स्क्रीन रखा गया है जिस पर इमेज प्रोड्यूस होता है। Thank you so much and if you find any type of difficulty, feel free to ask.